Hello everybody and welcome to my channel once again. So the video preparation continues. Now we'll see in this video the difference between the use of between and among, or we'll see the use of between and among, which will help you a lot in writing or speaking English. Okay, we'll see. We'll go to the side of the video. We'll start the video now. Between is used when we speak of two persons or things. I hope you know it. Between is used when we speak of two persons or things. But among is used when we speak of three or more people or things. That's a general concept and everybody knows it. Because we say distribute the sweets among the children, but distribute the sweets between Sita and Gita. This is known to all. Besides that, we use between before the specific number of people or things. आम जाचु जितेबले दुईटी जिनिस दुईटी लोकों विषय आम कही था से आम बिटवीन यूज करी जो जगार माने तीन बा ततोधिक लोक बा जिनिस विषय कह जाए से आम अमंग यूज करी था। बट आउ गोटे कथा देखा जे मुझे व्यवहार करी डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रेन। ओके ठीक अच्छे, बट डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द 50 चिल्ड्रेन। बिटवीन द 50 चिल्ड्रेन ता माने हला जितेबले स्पेसिफिक थिबो, स्पेसिफिक माने कौन बुझला, स्पेसिफिक संख्या नंबर थिबो जमते कि 50 हला बा केतोटी बोली हमको जणा थिबो से जगह आम बिटवीन यूज करवा। आ जितेबले सेटा अनस्पेसिफिक थिबो सेटी यूज करा जिवो अमंग। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रेन बिकॉज वी डोंट एक्जैक्टली नो द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, but distribute the sweets between the 50 children. We know the number of the children, that is 50. So आमे एटा जे बेसी हेले जो जगह से अमंग यूज करा जाय थे एवं दुईटा हेले से बिटवीन यूज करा जाय थे सेतिकरी नुहे। बेसी हेले मध्य जेतेबेले संख्या जणा थिबो जे जोठी 20, 50, 30, 100, 1000 इत्यादि सेठी आमे बिटवीन यूज करिबा। ओके, सो I have tried to give some examples to make it clear. Amar lives somewhere between the university and the hospital. এটা তুমি বুঝি পারুথিব দুইটি আছে, the university, the hospital. So Amar lives somewhere between the university and the hospital. Similarly, the municipality is building a new road between the police station and the railway station. ये दुईटा जिनिस है, गोटे है पुलिस स्टेशन आ गोटे है रेलवे स्टेशन। ओके, लक्समबर्ग लाइज बिटवीन बेल्जियम, जर्मनी एंड फ्रांस। एठी हमें देखला द नंबर ऑफ कंट्रीज इज 3, द फिगर इज गिवन देयर, दैट्स 3। सो सेठी पई एठी हला लक्समबर्ग लाइज बिटवीन बेल्जियम, जर्मनी एंड फ्रांस। ये दुई रु अधिक है, तथापि आम ये बिटवीन यूज कला। तार कारण होछि हमको ये संख्या जना अछि। सिमिलरली संबलपुर स्टैंड्स बिटवीन बुल्ला, हीराकुद एंड सासन। वी नो द नंबर ऑफ टाउन्स हियर इज 3, देयरफॉर संबलपुर स्टैंड्स बिटवीन, नॉट अमंग। बट Sambalpur stands among a number of small towns, a number of small towns. Seti among abo. Pune is located among many hills because we don't know the number of hills. Manakar ethi emti thanta, Pune is located dash 6 hills, between 6 hills, right? You can see a passage between the two pillars. Although pillars eti plural achi, but eti sankhya achi 2. So eti between abo. You can see a passage between the two pillars. So we will come and conclude. Ame एटी कनक्लूड करिबा जे
जो जगार दुईटी जिनिस थी सेठी आम बिटवीन यूज कला जो जगार एकाधिक थी बट संख्या आमको जना नथि आम अमंग यूज करवा बट जो जगार अधिक थिले आमको लगुले सेठी संख्या जदि थी सेठी आम यूज करवा बिटवीन सो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द 50 children and distribute the sweets among the children. Here among the children the number of children is not known, it's quite unspecific, but here the number of children is known, that is 50, therefore we use between here. I hope you will have understood and you will have got the clear concept regarding the difference between among. So that's the end of this video. See you in my next video, and until then have a good day and bye.